So, hello my dear students, myself Dr. Rajesh Kumar Sahu, Assistant Professor in Chemistry, and I am teaching you Organic Chemistry, and today we will start Unit 4. So, in Unit 4, our discussion is mainly on alkaloids and terpenes, but today we will discuss about alkaloids. So, पिलामाने आमे alkaloids विषय पढ़िबा मोर last videos मानकरे बा last class मानकरे I have explained you in details regarding the heterocyclic compounds. Means you know very well that the cyclic compounds in which one of the atom is heteroatom, then these are called heterocyclic compounds, and these are also part of this. These alkaloids are also part of this heterocyclic compounds because they contain heterocyclic ring systems, and the use of these alkaloids and their behavior towards human biological system is very important. So, we will discuss a new thing, very new thing to all of us is called as alkaloids and terpenes also, and but today onwards we will discuss about alkaloids. First students, alkaloids have plant origin, means alkaloids पहले कौटु मिले ना प्लांट रू मिले. तो हम फर्स्ट लिखि दवा से जे यार यदि हम origin कहबा तो origin होउची origin प्लांट्स रो पार्ट रू हमको मिले, प्लांट्स रो विभिन्न पार्ट रू मिले, वो तो बार्क रू मिली पारे कि बा सीड रू मिली पारे, रूट रू मिली पारे, फ्लावर रू मिली पारे, लीव्स रू मिली पारे. So it is plant origin. Second thing is that it contains main thing is that it contains heterocyclic system containing nitrogen. So या भितर कौन थी वो mainly contains heterocyclic compound having nitrogen atom. This is the main part. Remember students that these alkaloids contain heterocyclic compounds having nitrogen atom. पिले कहला सेमती किए थाई पारे तो कहिचे मो you can see these structures. This is a structure already we have discussed in heterocyclic compounds. या ना होची pyridine. So you may have a pyridine nucleus. Pyridine nucleus थाई पारे. You may also this one. Look at this structure. This is called pyrrolidine. You have pyrrolidine nucleus, pyro P-Y-R-R-O. You may have this one also. You know pyrrole ring systems are there, pyridine, pyrrolidine, and you have also you can call as the piperidine also, piperidine. Piperidine means this one, a 6-member ring structure. This is called piperidine. So you have heterocyclic ring systems like pyridine, pyrrolidine, piperidine. These are some of the heterocyclic compounds which are present in plants and we call them as alkaloids. So alkaloids are heterocyclic compounds containing nitrogen atom. As it contains nitrogen, alkaloids are normally basic in nature. They are basic in nature. Basic nature. एमान सब base कहीं they contain nitrogen. अब ये कोड थांती ना plant रो leaves से थांती. Leaves, seeds, bark, etc. यही सब पार्ट रे हमको रूट से मिले, रूट रहते हो रूट, bark, seeds, leaves. So all these parts of the plant contain alkaloids. So alkaloids are plant origin. They are heterocyclic compounds having heterogeneous base system like nitrogen present in heterocyclic compounds like piperidine, pyridine, pyrrolidine. All these are the
structures present in alkaloids. To these parts, other parts are there. Maybe one ring, maybe more than one ring, maybe a mixing of pyrrolidine and piperidine, pyridine, pyrrolidine, like this. We will discuss later on when we will discuss about its classification. Secondly, normally 40 different plants, you can say 40 plant families, 40 plant families contain alkaloids. पाखापाखि 40 टी रु अधिक प्लांट रो फैमिली मानकरे ए alkaloids हमको देखिबाकू मिले. एवं आउ जिनस मु कहि दे अबाउट alkaloids ये जे मेनली ए जो आमे कहूचु जे प्लांट रु आमे आनुचु तो एमती नहीं जे बिना many plants are there which do not contain alkaloids, but many plants have alkaloids. एवं ये alkaloids थिले कौन लाभ नथिले कौन लाभ, the research is going on this, but मु कहि दिए the main function of alkaloids है, main functions of alkaloids होचे एया, functions of alkaloid, function actually it acts as a protein, you can say protein synthesis पाई कि ये हमको साहाय्य करे, तो we can say it's a reservoir for protein synthesis. These are a reservoir for protein synthesis, protein synthesis. एमाने प्रोटीन सिंथेसिस रे रिजर्वर भले काम करती को माने नाई अल्कालॉइड्स माने आउटे काम होला जे एमा जो आमे जो कहू जे दे आर वेरी यूजफुल इन केस ऑफ द प्लांट्स हैविंग प्रोटीन सिंथेसिस पाई के माने कर काम सही बोले आउटे काम होला प्रोटेक्टिव यांकर एक्टिविटी अछि माने प्रोटेक्टिव towards animals and humans. माने जेहेतु आमे एनिमल्स और ह्यूमन्स माने नॉर्मली एई मानकू आमे कोन ए प्लांट्स मानकू अटैक करू विभिन्न कार्य पय कमे यूज करि थाउ तो दे हैव ए प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ थिंग्स अल्कालॉइड्स थिले से निजको प्रोटेक्ट करि परिबे फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. सेकंड हैला लाइक जेमति हार्मोन से भलिया मेनी अल्कालॉइड्स are used as a plant stimulant. आमे कहबा या used as plant stimulant आकारे मध्ये यूज होंती stimulant plant stimulants आकारे मध्ये माने यूज होंती. तो ये तांकर मेन फंक्शन गोटे हला प्रोटीन सिंथेसिस रे माने सहायता करंती एमाने प्रोटेक्शन दियंती गछ को बा से प्लांट को प्रोटेक्शन दियंती फ्रॉम ह्यूमन्स और एनिमल्स आउ एमाने प्लांट रो स्टिमुलेंट बा स्टिमुलेशन पाई के एमाने सहायता करंती जेमति का हम हार्मोन्स वी नीड हार्मोन्स फॉर आवर ग्रोथ आवर प्रोडक्शन फॉर रिप्रोडक्शन फॉर मेटाबॉलिज्म. सो आई कैन से एमाने काम होला ग्रोथ मेटाबॉलिज्म आउ रिप्रोडक्शन growth metabolism and reproduction. So pile ये तरह main functions many functions are there. The best three, the important three functions are semane reservoir for protein synthesis, protective towards animals or humans, and second होची third one होची जे plant stimulants जोटा कि दरकार गछ पाई बा गछ पाई तार ग्रोथ पाई तार मेटाबॉलिज्म पाई और रिप्रोडक्शन पाई कि ए अल्कालॉइड्स मानकर हेला मेन रूल. सो आमे एई जो जनरल जिनस जानला पड़े एबे आमे जिबा ए अल्कालॉइड्स मानकर क्लासिफिकेशन को जिबा हेला. सो क्लासिफिकेशन एंड जिबा टुवर्ड्स इट्स नोमेनक्लेचर मु कहि दिए सेमति कि ब्रॉडली क्लासिफिकेशन रूल्स नाही बा नोमेनक्लेचर पाई सेमति किछि ऑर्गेनिक जो आमे जेमति आमे सो नेमिंग करू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मानकर सेमति किछि डेफिनाइट रूल नाही बट सम रूल्स आर देयर through which we are writing the name of these alkaloids. So आमे जिबा नेक्स्ट पॉइंट को जिबा से हेला nomenclature and classification. आमे लाको संग्रह ही पढ़ी दबा
mainly classification are more important. Classification normally based on the heterocyclic ring systems ଉପରେ classify କରାଯାଉଛି, but nomenclature ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ you know many alkaloids have their names are derived from botanical names, botanical names. So you can say that many alkaloids are named according to their botanical name. For example, papaverine is one of the alkaloid. Here structures देखो सबुठ देखो in रो उच्चारण आसीबो. You can see here pyridine, pyrrolidine, piperidine. So last INE उच्चारण रहउची. So its name is called papaverine, PAPAVERINE, papaverine. So it is a word is coming from the botanical name. सब सब पढ़िथियो बॉटनी जे पढ़िथियो प्लस 2 जानिबो जे मेनी बॉटनिकल नेम्स आर देयर, ग्रास मानकर हो, प्लांट्स मानकर हो, एनिमल्स मानकर हो, ये मेनी botanical mainly botanical name means plants heitibo and zoological names means animals heitibo. So these names not asked. Second one is physiological activity. हम कहीदे यही मानकर मेन काम हो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. यदि आम अल्कालॉइड्स माने नॉर्मली अल्कालॉइड्स कौन तो ना शुणी निकोटिन ना शुणी जो सिगारेट जो मैंने सिगारेट स्मोकिंग करती बा सिगारेट वन टाइप ऑफ जो आम नॉर्मली कहूचे जे गुटका हो बा सिगारेट हो बा से भाया कि जिनस हो माने गांजा हो ओपियम जो आम कहूँ ओपियम बा अफिम बोली आम कहूँ ओपियम OPIUM ओपियम हो ये सब अल्कालॉइड्स माने गछर प्लांटर कार सीड रु आछि कार बार्क रु आछि कार लीव्स रु आछि कार रूट रु आछि. इट कंटेन्स वन टाइप ऑफ स्टिमुलेंट्स माने हमको कौन कहलो माने आम जमी गंजाई जो नियंती से कौन देखे एमती होते दैट मीन्स गंजा हो बा अफिम हो ये सब निशा द्रव्य. ए निशा गुड़क आम नार्कोटिक्स ड्रग आम समटाइम्स कहू एंड ओपियम इज हाईली एडिक्टिव नार्कोटिक ड्रग्स. सो वन ऑफ देम इज ओपियम OPIUM आम तुम अफिम बोली कहूँ ओडिया रे आम कहूँ अफिम बट जे ओपियम OPIUM इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लाटेक्स ऑफ द ओपियम पॉपी सीड. ओपियम पॉपी रो सीड थाए से सीड ओपियम कम्स फ्रॉम इट्स सीड सीड रु आसे और सीड पॉड आम जो ओपियम पॉपी सीड पॉड रु ओपियम आसे एवं सेटा गोटे लाटेक्स रु ही अठा भया जिनस से आमको ओपियम आम पाऊ. तार फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है यदि ओपियम तो नहीं तुम निशा हो तुम किसी तुमको जना पड़े तुम किए बोली मैंने तो भूली जे मु किए बोली. दैट मीन्स इट इज वन टाइप ऑफ गोटे प्रकार नार्कोटिक ड्रग्स. नार्कोटिक ड्रग्स या आम माने आदु सेवन करे तो उचित भी नुहे. एज यू नो वेरी वेल दैट नाउ डेज यू हैव तुम सब देखुव जानूव रिसेंटली बाय मेनली आमर मेन काम है जे यही सब जिनसर जो सब ट्राफिक ड्रग ट्राफिकिंग चलती माने एगुड़ाक आम मेनली लोक मैंने यूज कर. सो दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ इट्स मेनी फिजियोलॉजिकल यू कैन से एक्टिविटी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी घटब एवं आम देह को धीरे धीरे से खराब करदेव एवं इट ऑल्सो लीड्स टुवर्ड्स डेथ. ताकि आम कहूँ पॉइजन भी कहूँ स्लो पॉइजन भी दीज आर वेरी पॉइजनस वेरी पॉइजनिक थिंग्स but these are called alkaloids. But many things are there. For the very small amount of alkaloids अल्प मात्रा रे आम alkaloids नहीं करी मध्य गोटे रोगी को ऑपरेशन समय आम यू कैन गिव दिस alkaloids for as an anesthesia and some alkaloids are used as an anti-malaria drugs. You know quinine is also used as anti-malaria drugs. You can say antiseptic. Then analgesics. Many alkaloids are used in medicines also, but it is in less quantities. Or the more quantities ହେଇଗଲା तो निशा हो. Anyway आम ता भर को जीवानी बाहर को पलि आसवा. तो आम थिलु कौठू nomenclature and classification थिलु. तो botanical ना अनुसार मध्य आम we can name the alkaloids and as you can see here the example of papaverine. And the second one is the physiological activity अनुसार मध्य ना दे पारिबो जेमती you know one more name is called morphine MORPHINE
example is morphine. You can have also name comes from its physiological activities. Similarly, some investigators, means some scientists, they have also you can synthesized these alkaloids from plants and plants part, and by their name they have been named. One name is called paletirine by investigator ताको नाउन साइज paletirine yes PALLETERINE PALETERINE paletirine is one of the it comes from Pelletier is the scientist Pelletier ताको नाम अनुसार एटा हेछि paletirine हेछि इट्स ए इन्वेस्टिगेटर्स नेम अनुसार मध्य आमे अल्कालॉइड्स मानकर ना देइछु. सो थ्री थिंग्स मेनली मु कहि दिए जे वन इज द बायोलॉजिकल नेम अनुसार हेछि, वन इज द यू कैन से द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी देखि करी हेछि, आउट हेला इन्वेस्टिगेटर नाम मानकर मध्य ये ना दे जाइछि. तो ये सब हेला अल्कालॉइड्स मानकर नाम. बट वन थिंग इज कॉमन यू कैन सी देखो लास्ट INE ର उच्चारण बा गोटे स्पेलिंग रोची INE. So it is the naming systems how to name the alkaloids. So after that now we are going towards classification. This is very important because many compounds, the structures are very much complex structures of alkaloids. Alkaloids मान को structure भारी complex. एते छोटो molecule नुहंती जब just like pyridine molecule नुहंती ठीक है बड़ molecule थांती हुए तो यही रिंग संगे यही रिंग भी लगी बा यही रिंग संगे भी आमर यही रिंग लगी तो सही अनुसार आम क्लासीफाई करवा बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग systems. So when we are classifying it broadly आम ताकू 5-6 प्रकार रे आम ताकू क्लासीफाई करवा वन बाय वन आम जीवा एवं जानिबा जे अल्कालॉइड्स मानकू केमिति आमे क्लासीफाई करिछु. फर्स्ट हैला हमरो मेन कंपाउंड्स होछि पाइरोलिडिन. आमे जीवा पाइरोलिडिन को जीवा. पाइरोलिडिन ये होछि हमरो पाइरोलिडिन एटा होछि हमरो अल्काल पाइरोलिडिन अल्कालॉइड माने पाइरोलिडिन रो रिंग थिबो एवं ताकू पाइरोलिडिन अल्कालॉइड तो पाइरोलिडिन थिबो एवं ताकू बाकी पार्ट भी लागि थिबो. तो पाइरोलिडिन कौन गोटे 5 मेंबर रो रिंग स्ट्रक्चर गोटे 5 मेंबर रो रिंग स्ट्रक्चर एवं सेथिरे मेन पार्ट थिबो नाइट्रोजन. इट इज ए मेन पार्ट हैला नाइट्रोजन. लुक एट दिस स्ट्रक्चर बस देखो ये 1 2 3 4 5 तो 5 member ring structure 4 atoms are carbon and the other one is nitrogen. So it is a heterocyclic ring system. Its name is called pyrrolidine. And this pyrrolidine जो आम तैयारी करूँ याकू एटा को नहीं करी अल्कालॉइड्स अच्छी माने याकू एइतरे आउ किछि साइड रे लागि थो ताको आम अल्कालॉइड्स को. तो वन ऑफ द नेम ऑफ दिस एई भलिया जो पाइरोलिडिन अल्कालॉइड्स रो नेम हैला हाइड्रिन. हाइड्रिन HYGRINE हाइड्रिन. हाइड्रिन कौन ना यही अल्कालॉइड्स अच्छी सही N थिबो. This N is there and you have a group like this CH2 CO CH3 like this. Like this. This is called as the hygrine. 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 Hygrine is a alkaloid. You can see this is a part of it. This one is nothing but this one. So you see that this one is your pyrrolidine and this compounds contains pyrrolidine. You can see H is here. It is a pyrrolidine system. And along with this, you have a substituent like acetone CH2CO CH3 বা acetyl methyl गोटे कंपाउंड लगी तार नेक्स्ट कार्बन को एवं
यही प्रकार अल्कालॉइड्स ना होची हाइड्रिन. सो दिस इज द मेन पार्ट. यही पार्टा ये थिबा हेतु आमे यही प्रकार जो हाइड्रिन अल्कालॉइड को आमे क्लासिफाई करबा ता ना कोन दबा पाइरोलिडिन अल्कालॉइड. यार पूरा ना होची हाइड्रिन इट्स नेम बट द अल्कालॉइड्स क्लासिफिकेशन जो फैमिली रे अछि ता ना होची पाइरोलिडिन. सो पाइरोलिडिन इज one classification of alkaloid in which you have seen the pyrrolidine nucleus present in hydrogen and pyrrolidine कौन ना गोटे 5 मेंबर रिंग containing nitrogen. पे बुझीगला. तो आमे क्लासिफिकेशन पढ़ुचे. क्लासिफिकेशन रे प्रथमे कौन पढ़िले ना पाइरोलिडिन अल्कालॉइड्स पढ़िले. पाइरोलिडिन कौन ना गोटे 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग हैविंग नाइट्रोजन. Clear? About example del dana hochi hydrogen. So these are examples. Remember some examples also, because in examination you have to write one example of pyridine alkaloid, then you can write the structure also. But you remember some simple alkaloids and their structure also. Okay. So next we will go to the second one, classification number 2. Classification number 2. So is piperidine alkaloids. Piperidine alkaloids. Piperidine alkaloids. So next classification is what now? Piperidine alkaloids. So what is piperidine? Just like it is the 6-member ring system. So you have seen the 5-member ring system. This is the 6-member ring system. Cyclic 6-member ring. Ring to ring means ring, it is a ring one. So cyclic systems have with a nitrogen atom, and remember that this system doesn't have any unsaturation. माने कौन डबल बॉन्ड किछि नाही, सब सिंगल बॉन्ड अछि एवं हेतरे 6 टी अछि 1 2 3 4 5 टी अछि कार्बन आउटे कौन अछि नाइट्रोजन. ता ना होछि पिपेरिडिन. पिला माने सबुठु बेसी इंपोर्टेंट कथा हला एया जे हमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे जानिया पड़े जे मूल जिनसटा कौन अछि, एतरे कौ जिनस अछि, तो अल्कालॉइड से कौ जिनस अछि. तो बारंबार कथा कहूछि, प्रथम रे कहि सालिनी एई भलिया रिंग थिबो निश्चित से हेले गोटे 5 मेंबर किंबा गोटे 6 मेंबर रो हेटेरोसाइक्लिक रिंग थिबो. नॉर्मली एई 3 प्रकार रिंग थाए, पिरिडिन, पाइरोलिडिन आउ पिपेरिडिन. पाइरोलिडिन नहीं करी मु तुमको गोटे एग्जांपल कहि हाइड्रिन है जी गोटे अल्कालॉइड. तापर तुमको आउ गोटे एग्जांपल में कहूँ जे पिपेरिडिन न्यूक्लियस कौन ना पिपेरिडिन है गोटे 6 मेंबर रो स्ट्रक्चर विथ नाइट्रोजन एटम. ये पिपेरिडिन. तो याकू नहीं करी जो गोटे एग्जांपल तुमको मु कहवाक जाउची से है दिस वन. यू कैन सी द स्ट्रक्चर आल्सो. दिस इज द स्ट्रक्चर. ये आमर कॉमनली रहिबो. तो एटा आम रहिला, बाकी साइड रे आउटे ग्रुप लागिबा अछि और दिस ग्रुप इज दिस वन CH2 and we have CH3. This is the structure. So you can see CH2 and CH3. It's a propyl system. Propyl attached to carbon number 2. No, not 2, means numbering 2. ये है 1. So 1 2 3 4 5 और 6. यही नंबरिंग केमिति हुए ता तुमको मोर आगामी जो वीडियो मान कर क्लास नहीं छी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पार्ट 1 पार्ट 2 हेते पूरा बुझे नंबरिंग केमिति करबो. सो 3 रे अछि प्रोपाइल. सो 3 प्रोपाइल पिपेरिडिन आमे जे एई भलिया गोटे कंपाउंड्स ना कहबा ये होछि कोएनिन CONIINE कोनाइन यार ना होछि कोनाइन. सो ना कोनाइन इज one type of a poisonous drug to humans. It is a poisonous, very much poisonous to humans. तो ये सब माने मु कहूँ ड्रग्स माने बुझतब. ड्रग्स माने आमे खाली कहबानी जे ड्रग्स माने भलो. ड्रग्स रो अर्थ दी प्रकार. ए स्मॉल डोज may inhibit our problem, may inhibit our difficulties or pain inside the body. It can remove the pain also to make us well, but its higher dose may have some type of poisonic activity or narcotic activities
having some disorderness in our physiological behavior. This is called as the drugs. Normally what we say. So one of them is the conine, CONIENE, conine, and it is a poisonous to human beings. So this is a class of drugs or alkaloids which contains the piperidine nucleus. This one is the piperidine nucleus. So piperidine nucleus or pyrroline nucleus, they have the different types of alkaloids family. आमे 3 नंबर को जीवा आउट प्रकार आमे जीवा न्यूक्लियस देखो आउट कहि छी मु मेन हला हम pyridine. So you can have a pyridine nucleus also. Sometimes we can have pyrrolidine also. pyridine मिसे को थाई पारे तो pyrrolidine हम लिखि दबा या pyrrolidine and pyridine, or you can simply call pyrrolidine hyphen pyridine alkaloid. So third type of classification is what? Your pyrrolidine and pyridine alkaloid. So pile pyrrolidine ring hochi eita, pyridine ring hochi eita, duita jodi joint hai thiba. So this is the pyridine nucleus, ye hochi amara pyridine ro nucleus. Au third position को लागिछि एटा कोड लागिछि आमर पिपेरिडिन रो सेकंड लागिछि तो थर्ड को पिपेरिडिन रो सेकंड. सो लुक एट दिस टिके ठीक लिखा पड़ो दिस वन ये 1 2 3 ये 1 आउ 2 माने आमे कहबा जे पिरिडिन रो थर्ड पोजीशन को पिपेरिडिन रो सेकंड पोजीशन लागि थिबो एई भलिया गोटे स्ट्रक्चर. If you have seen in alkaloid, then it is called pyrrolidine pyridine alkaloids. Kya pyrrolidine pyridine alkaloids. And remember, the most important example of this one is your important जो cigarette बा बीड़ी जो मैं कहूँ बीड़ी रे जो थाए जो मसला थाए ता ना अछि निकोटिन. सो निकोटिन रे इटा अछि. तो आज पाठ हूँ पूरा मेडिकल साइंस पाठ बा मेडिकल पाठ बा जानिया कथा नॉर्मल जिनस जानिया कथा जो आम जो बीड़ी हो सिगारेट हो गांजा हो अफिम हो कहूचे ए सब कौन ए सब केमिकल्स ए सब कौटू आसे ना गछ देहरु आसे आ ता भितर कौन थाए थाए केमिस्ट्री. आ केमिस्ट्री रु ही आमर सब फिजियोलॉजिकल आम निद आसवा आमको गोटे प्रकार निशा लगिबा बा देह खराब होबा विभिन्न कार्यक्रम रे एई सब निशाजात द्रव्य मान को आमको आम यूज करथाउ. तो एई जो कंपाउंड ना कहली एई कंपाउंडटा होची निकोटिन रे अछि. तो आम कहीदेबा यदि एई कंपाउंड निकोटिन रे अछि तो निकोटिन कौन ना एई कंपाउंड रो यदि एई जगह रे मिथाइल लगे देबी देखो मु कोन कले कहली एईटा होची मोर पायरोलिडिन pyridine रो अल्कालॉइड एइतरे मु कोन कली एई पोजीशन रे मु लगे देली CH3 तेबे या ना हे जीवो निकोटिन. एइटा सेही ड्रग या ना होची निकोटिन. या विषय डिटेल आमे पढिबा आगामी क्लास मान रे पढिबा जे निकोटिन कोन निकोटिन केमते सिंथेसाइज हुए ता विषय जानिबा. तो रिमेंबर पिला माने वर्तमान जाए मु तुमको किसी क्लासिफिकेशन पढ़ेली आहरी किसी क्लासिफिकेशन भी आसंता क्लास रे मु तुमको पढ़ेबी हैं. तो वर्तमान को टिके आम या नोट सेल करके आम जिस्ट नहीं जावा. जिस्ट है या आज पाठ पढ़ा हूँ अल्कालॉइड्स विषय रे. अल्कालॉइड्स कौन ना प्लांट देहरु बा गछ देहरु आसी थाए गछरे थिबा सीड गछरे थिबा तार बार्क किंबा लीव्स रु आसी थाए. हेथिरे गोटे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड थाए कंटेनिंग नाइट्रोजन. As it contains nitrogen, it is basic in nature. Second रहेला 40 प्रकार ये भलिया प्लांट फैमिलीज अच्छी एमाने सब कौन फंक्शन करती फंक्शन लिखी एमाने प्रोटीन सिंथेसिस से सहायता करती प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स एनिमल्स आउ प्लांट स्टिमुलांट्स आकार यूज होती एवं ताको आमे केमती क्लासिफाई करबा केमती का ना दबा बोटनिकल नेम देई हबो जे पापाभेरिन फिजियोलॉजिकल ना देई हबो जेमती का मॉर्फिन जी डिस्कवरी कला ता ना दे हाँ पैलेटरिन बा पैलेटरिन जो साइंटिस्ट नाम दिखाई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिंग स्ट्रक्चर्स पायरोलिडिन अल्कालॉइड्स पिपेरिडिन अल्कालॉइड्स एंड पायरोलिडिन pyridine अल्कालॉइड्स. बाकी किसी क्लासिफिकेशंस आउ यार आगामी कथा आगु को आमे जिबा. वर्तमान पाई एतिकी. थैंक यू वेरी मच.